reading passage 3. We are having again a list of headings 27 to 32. And they have not done even a single one. हर एक पैराग्राफ थी पढ़ना चाहूँगा पहला मैं हेडिंग सो दैट एक स्टोरी दिमाग दे विच रहूगी डिफिकल्टीज ऑफ टॉकिंग अबाउट स्मेल्स या इट्स डिफिकल्ट टू टॉक अबाउट द स्मेल क्योंकि अपने को कोई वर्ड्स नहीं होंगे आप कहते बहुत अच्छी स्मेल है बहुत बुरी स्मेल राइट द रोल ऑफ स्मेल इन अ पर्सनल रिलेशनशिप ओके पर्सनल रिलेशनशिप्स फ्यूचर स्टडीज इनटू स्मेल फ्यूचर स्टडीज ये तो अगे जाके पैराग्राफ्स च होनी चाहिए गल द रिलेशनशिप बिटवीन द ब्रेन एंड द नोज ओके द इंटरप्रिटेशन of smells as a factor in defining groups. Why our sense of smell is not appreciated? क्यों साडी sense of smell ਨੂੰ appreciate नहीं किया जाता? Smell is our superior sense, okay? The relationship between a smell and feelings. Question number 33 to 36. According to the introduction, its meaning is I'm having introduction clearly visible also. 34th answer, B paragraph, clearly you das raha question chi. 35th C paragraph, 36th E paragraph. 37th could be anywhere, but yes, it will be in a serial order. First will come 37, then 38 and 39. 37th question, tests have shown that orders can help people recognize the dash belonging to their husbands and wives. टेस्ट ने प्रूव किया है कि ऑर्डर हेल्प करता है कि असी रैकोगनाइज कर सकीए कि कोई चीज़ आ जिहड़ी बिलोंग करती है हसबैंड ते वाइफ नूं मेरे ख्याल दे विच एक मैं हैडिंग भी देख रहा सीगा उस जगह ते भी मैनूं पर्सनल रिलेशनशिप वर्ड आया सी हसबैंड एंड वाइफ या चिल्ड्रन पर्सनल रिलेशनशिप की गल कर मतलब आई शुड बी केयरफुल समवेयर जो हैडिंग इस दे नाल मैच कर गई एक क्वेश्चन का आंसर उस पर्टिकुलर पैराग्राफ दे विच होने के चांसेस हो गए फिर बाद दे विच लिखा गया सर्टेन लिंग्विस्टिक ग्रुप्स मे हैव अ डिफिकल्टी डिस्क्राइबिंग द स्मैल सेम हैडिंग इस लिखे दी भी अपने कोल मेरे ख्याल दे विच आपां पढ़ी सी राइट द डिफिकल्टीज ऑफ टॉकिंग अबाउट द स्मैल्स चलो देखांगे उत्थे लिंग्विस्टिक की गल कर गया उन्हें कहा कि आप उहदे बारे गल किदां करांगे स्मैल दे उत्ते अपने को है ही नहीं बोलण वास्ते अच्छा या बुरा इस तो अलावा तो अपने को कोई वर्ड ही नहीं आ रहा राइट चलो नाउ फ्रॉम इंट्रोडक्शन आई एम गोइंग टू गेट द वन आंसर दैट इज ऑफ द 33rd आई शुड बी केयरफुल अकॉर्डिंग टू द इंट्रोडक्शन वी बिकम अवेयर ऑफ द इंपॉर्टेंस ऑफ स्मैल जदों असी अवेयर हुंदे हाँ वी बिकम अवेयर ऑफ द इंपॉर्टेंस ऑफ स्मैल वैन हम देखते हैं वैन च की कहना चाहता सानू कदों अवेयर होवांगे आपां The sense of smell or olfaction is powerful. Odors affect us on a physical, psychological, and social level. For the most part, however, we breathe in the aromas which surround us without being consciously aware of their importance to us. साडी सराउंडिंग दे विच स्मैल तो अवेलेबल हुंदी है पर बिना उसकी अवेयरनेस तो आप उहदे विच रह रहे हैं इट इज़ ओनली वैन नाउ क्वेश्चन भी इदां दे कुछ कह रहा वी बिकम अवेयर तो पहला उसने लाइन च लिखा कि सानू पता नहीं हुंदा कि असीं रह रहे हैं उस स्मैल दे विच कहंदा हुण लाइन्स नूं अंडरस्टैंड करके आंसर मिलना चाहिए कहंदा इट इज़ ओनली वैन द फैकल्टी ऑफ स्मैल इज इंपेयर्ड फॉर सम रीजन मतलब असी स्मैल नूं रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते इंपेयर्ड मतलब डैमेज हो जाना कि किदां दी स्मैल आ राइट दैट वी बिगिन टू रियलाइज द एसेंशियल रोल ऑफ द सेंस ऑफ स्मैल प्लेज इन आवर सेंस ऑफ वेल बीइंग तब सानू पता लगता कि सेंस कितना रोल साडे लई प्ले करदी है जदों साडी दिमाग कह लो कि साडी जिहड़े डैमेज हो जांदे आ सेंस नूं करने वास्ते किनू सेंस करने वास्ते ऑब्वियसली स्मैल नू सेंस करने वास्ते क्लियर कट आंसर इज सी फॉर द क्वेश्चन नंबर 33rd वन
our ability to smell is damaged. A paragraph. I should be careful. Headings भी मैनू आई चाहिए इन्हां दियां. A survey conducted by Anthony asked the participants to comment on how important smell was to them in their lives. Survey किया गया तो उसने पूछा गया कि कितनी important है smell to them in their lives. It became apparent that smell can evoke a strong emotional responses. Smell की पैदा करती है, strong emotional response. A scent associated with a good experience can bring a rush of joy, fall order or the one associated with a bad memory. Kal kisdi gall hai? Relationship di gall kar. Bad memory may make us grimace with disgust. Respondent to the survey noted that many of their smells, likes and dislikes were based on emotional associations. Bonding di gall, relationships di gall. Such associations can be powerful enough so that the order that we would generally label unpleasant become agreeable, and those that we would generally consider fragrant become disagreeable for particular individuals. Perception of smell, last line ya heading bhi aani chahiye tanu. Perception of smell therefore consists not only of the sensation of the odors themselves, it's not only about the odors, but of the experience and emotions ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ. Let's see the headings. Yes, it's the 8th one. Clearly, the relationship between a smell and feelings. 8th is the heading. B paragraph. Odors are also essential in social bonding. ज़रूरी हैं social bonding वास्ते. One respondent to the survey believed that there is no true emotional bonding without touching and smelling a loved one. मतलब एक one respondent to the survey ने believe कर रहा सी कि कोई true emotional bonding नहीं है बिना किसी touch ते smell तो, right? In fact, छोटा बच्चा, infants recognize the odors of their mothers soon after the birth, right? और अपनी मां ਨੂੰ smell ਦੇ ਨਾਲ recognize ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਦੀ ਮਦਰ ਜਾਂ ਮਦਰ ਚੁੱਕ ਲਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਂਦਾ. ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਲਾਈਫ 'ਚ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ. ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਮਦਰ ਕੋ ਜਾ ਕੇ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਊਗਾ, ਦੂਸਰੇ ਕੋ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗਾ. ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਸੇਮ ਉਹਨੇ ਹੀ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਚੱਕ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਬਟ ਸਟਿਲ ਉਹ ਬੱਚਾ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, right? And adults can often identify their children. कुछ वर्ड्स आ रहे हैं मेरे ख्याल, चिल्ड्रन आ गया, स्पाउस आ गया, हस्बैंड एंड वाइफ की गल हुई सी एक जगह पे. क्वेश्चन नंबर 37. स्पाउस देखते हैं हम स्पाउस के मामले की लिखता हो. Infants recognize the odors of their mothers soon after the birth, and adults can often identify their children or spouses by scent. In a well-known test, women and men were able to distinguish by smell alone what? Clothing, कपड़े जेड़े पाए गए worn by their marriage partners from similar clothing worn by other people, right? Or recognize कर सकते smell. Answer is the clothing for your question number 37th one, right? And heading, yes, it's the second one. The role of a smell in a personal relationship. यही तो गल कर रहे सी. Example भी देती हैं, एक नहीं देती, एक तो ज़्यादा ही दे गया वो मेरे ख्याल से, right? 34th question सी मेरे को. The experiment described in a paragraph B. देखते हैं अगे लास्ट वाला कुछ लाइन्स भी है. Most of the subjects would probably never have given much thought to order as a cue for identifying family members. ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਇਦਾਂ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਆਰਡਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰਸ ਨੂੰ ਰੈਕੋਗਨਾਈਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ before being involved in the test. But as the experiment revealed, even when not consciously considered what smells registers, right? मतलब सेंस हैगी भी आ आप स्मैल दे नाल करते हैं, बट स्टिल आप उन्होंने रियलाइज नहीं कर पा रहे, राइट? हैडिंग के मामले च गल की जाए तो ये
shows how we make use of smell without realizing it, revealed even when not consciously considered. Smells registered. Answer for your 34th and answer is A. C paragraph. C paragraph ਲਈ ਵੀ question ਸੀ ਆਪਣੇ ਕੋ. What is the writer doing in the paragraph C? ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ C paragraph 'ਚ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਉਹ. In spite of its importance to our emotional and sensory lives, smell is probably the most undervalued sense in many cultures. Our emotional and sensory life, smell is probably the most undervalued sense in many cultures. Right? मतलब ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ smell ਨੂੰ appreciate ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ. Heading ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, C paragraph, and answer comes out to be why our sense of smell is not appreciated. देख लेंगे अगे reason. Yes, the word is there. Reason दे देता गया. पहला idea देता गया, now reason दे रहा मैं. The reason often given for the low regard in which smell is held in that is that in comparison with its importance among animals, human sense of smell is feeble and underdeveloped. Right? Undervalued या ਇਹਦਾ मतलब clear हो गया. Heading पे 100% सही हो जाती है ਤੁਹਾਡੇ को for your C paragraph that comes out to be the 6th one. क्यों उस मामले ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ reason ਦੇ ਕੇ ਉਹ justify ਕਰ ਰਿਹਾ. It is true that olfactory powers of humans are nothing like as fine as those possessed by certain animals. They are still remarkably acute. Our noses are able to recognize the thousands of smells and to perceive odors which are present only in extremely small quantities. Answer for 35th one. What is the writer doing in a paragraph C? Rejecting a common belief. Answer is C for your 35th one, right? Feeble and underdeveloped, right? Undervalued कर रहे हैं, appreciate नहीं कर रहे. पहली लाइन अच्छी clear कर जाता. D paragraph. D question एक. Smell, however, is highly elusive phenomenon. And why it is elusive phenomena? Can the odors, unlike colors, for example, cannot be named in many languages. Because क्यों नहीं name किए जा सकते? कहता क्योंकि specific vocabulary simply doesn't exist. तो अपने को words ही नहीं है. मेरे ख्याल दे बेच answer 38th one वो clear कर गया इस जगह ते. Certain linguistic groups may have a difficulty describing the smell क्योंकि साढ़े को की नहीं है. Because they lack the appropriate vocabulary. That is the answer for the 38th one. And heading, मेरे ख्याल दे विच आपां पहले ही इस गल नूं एसोसीएट कर लिया सीगा. The difficulties of talking about the smells, right? क्योंकि साढ़े को word ही नहीं है. कहता we have to say when describing an odor, struggling to express our olfactory experience, nor can odors be recorded. There is no effective way to either capture or store them. Over the time, in the realm of days, we must make do with the descriptions and recollections. This is what the implication. E paragraph. Most of the research on smell undertaken to date has been of a physical, scientific nature. Significant advances have been made किस मामले दे विच in the understanding of the biological and chemical nature of olfaction. But अच्छा वर्ड होंदा हमेशा मैं कहना पहला थीम बदल जांदी हुंदी है, राइट? कंजंक्शंस ते लिंकर्स दे नाल. Many fundamental questions have yet to be answered. मतलब बहुत सारी चीज़ां दे हाले आपां नूं कोई आंसर ही नहीं मिले. Researchers have still to decide कि इस नूं whether smell is a one sense or two. One responding to the odors proper and the other registering the odorless chemicals in the air. Heading, last वाली line भी देख लेंगे. इधर ने questions कहता like these mean that interest in the psychology of the smell is inevitably set to play an increasingly important role. किन्ना वास्ते researchers वास्ते कुछ answers नहीं मिले. The researchers have still to decide. Heading
for E paragraph comes out to be future studies into smell, क्योंकि क्वेश्चन आंसर्स हाले भी साढ़े को क्लियर नहीं ਹਨ, right? Question number 39th. The sense of smell may involve response. किस ਨੂੰ response ਦੇਣਾ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ to dash ਜਿਹੜੇ ਕਿ smell ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, which don't smell, in addition to the obvious orders. एक जगह ते मेरे को word आया सी orderless, same paragraph ਦੇ ਵਿੱਚ, जिथे researchers have still to decide whether smell is the one sense or the two. उस जगह ते word लिखे सी and the other registering orderless chemicals. Orderless meaning is that don't smell. कौन? Chemicals. Chemicals is the answer for your 39th one. Question number 40th. Orders regarded as unpleasant in ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦਾ dash are not regarded as unpleasant in others. ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ unpleasant ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ regard, ਤੇ ਕਿਸੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ. However, smell is not simply a biological and a psychological phenomenon. Smell is a cultural, hence it is a social and historical phenomenon. Orders are invested with cultural values. Smells that are considered to be offensive in some cultures may be perfectly acceptable in others. Clearly, same line 40th question वाली लिखी हुई है. किस दी गल कर रहा मैं? Answer of the 40th, that is the cultures, clearly visible here. Smell considered to be offensive ਕਿਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਕੁਝ cultures ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦਾ perfectly acceptable ਹੈਗੀ ਆ. Therefore, our sense of smell is a means of and model for interacting with the world. Different smells can provide us with the intimate and emotionally charged experiences and the value that we attach to these experiences. ਅਤੇ ਉਹ values ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਇਦਾਂ ਦੇ experience ਨਾਲ attach ਆ, right? अगले लिखे से our commonly held feelings about smells can help distinguish us from other cultures, right? ਸਾਨੂੰ दूसरे culture ਤੋਂ ਅਲੱਗ distinguish ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ. Study of cultural history of smell is therefore in a very real sense investigation into the essence of human culture. F paragraph heading is the interpretation of smells as a factor in defining groups. Fifth is the answer. लिखिया भी सी उसने, members of the society in a deeply personal way, importantly, our commonly held feeling about smells can help to distinguish us from other cultures. Fifth one. Question number 36. What does the writer suggest about the study of smell in the atmosphere in paragraph E? Researchers have still to decide. The questions है हाले अपने को interest in the psychology of smell is inevitably set to play an increasingly important role. Smell is yet to be defined. D is the answer for your question number 36th one. This is all about your reading passage 3.